Assalamu alaikum and welcome to POP UP Learning. Now this is lesson number 8B, traffic signal with a buzzer. So now basically what we're going to do is today we're going to use another hardware that we have in our kit. आप देख सकते हैं हमारी किट में ये बजर की पैकेज है और एक ये छोटा सा बजर है. Now this buzzer, I'll bring it into focus. Basically it has two legs that you can see. One is the long leg and one is the short leg. The long leg is the positive और यहाँ पे हमें 5 वोल्ट देने होते हैं और नीचे जो है हम ग्राउंड कनेक्ट करते हैं 0 वोल्ट देते हैं, तो ये बजर एक साउंड प्रोड्यूस करता है. So let's bring the hardware into focus. Added a few wires for the buzzer. And now you can see this little orange wire which is from Arduino pin number 3 over here. ये इसकी पिन रो 17 पे मैंने रखा है और यहाँ से पिन रो 20 से मैंने एक कनेक्ट किया है यहाँ पे इस पे क्या कहते हैं ग्राउंड प्लेन में. ठीक है. So now what I do is I take the long leg of the buzzer and connect it on 17 और छोटी leg 20 पे. That's it. What I'm going to do is I'm going to connect the Arduino. Okay. Now it still has the same program from before, which is the traffic signal. Okay. So अब ये दोनों आपके सामने हैं और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये हमारा वही प्रोग्राम है. ठीक है, जिसमें कि हम अपना ट्रैफिक सिग्नल चला रहे थे. Now what we'll do is we'll add another variable here which is buzzer और buzz और इसको हम 3 कर देते हैं. ठीक है. Now what we need to do, change here is pin mode BU output. ठीक है. So we have added a new line for pin mode. Buzz is output, which is pin number 3. Yes, that is pin number 3. And what I want is कि जब ये येलो हो तब बजर ऑन हो जाए. ठीक है. डिजिटल राइट BUZZ हाई. अच्छा, और फिर क्या हो, ऑफ भी हो कभी. तो ऑफ कब होगा, तो जब ये वापस घूम कर आएगा इधर, जब ग्रीन ऑफ होगा तब ये ऑफ हो जाए. जैसे रेड शुरू हो तो ये हमने रखा है कॉन्सेप्ट. ठीक है. यू कैन हैव इट एनीवेयर यू वांट. बस लो. So let's check the program first, verify it. Let's upload it. तो रेड पे बजर ऑफ है, येलो पे ऑन होता है, ग्रीन पे ऑन रहता है और रेड पे दोबारा ऑफ हो जाता है. So there you go. So that's how you connect a buzzer.